principal from batch 45. We welcome our distinguished guests, our respectable teachers, worthy award holders and graduates, and last but not the least, the unsung heroes, our proud parents. A big round of applause for everyone, please. I would like to initiate with the great Iqbal's verses. कुल्ज़-में हस्ती से तो उभरा है मानिंदे हिजाब, इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है ज़िंदगी. From the sea of existence you arose like a bubble. In this dwelling of loss, life is your test. खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू. खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू. पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेज़िन्हार तू. While you are still immature, you are nothing but a heap of dust. When you ripen, you will become an irresistible sword. Classes came, classes went. It's worth a lot, the time you spent. Congratulations are now due to the graduates who are specially you. On this special day, I would like to congratulate you for a job well done. I want to take this chance to encourage you in whatever you choose to do in the future. On this graduation day, you must look ahead and dream of all the bright possibilities that your future holds for you. Today and for the rest of your life, may all your dreams come true. As we have officially started the ceremony, थोड़ी सी आपको हम instructions बताना चाह रहे थे. First of all, as it is a formal event, clapping is prohibited, although when the medals will be accorded, clapping will be allowed. All the doors to the halls will be closed when the dignitaries arrive. As आपको इंस्ट्रक्ट किया गया था आपकी रिहर्सल में कि मिडिल से आपने राइट साइड पे जाना होगा to receive your awards. The graduates of MS and MD will be seated on the front, and behind them will be the high achievers of all the batches. Rest of the batches, batch 41, 42, 43, are please requested to be seated at their designated places. The parents are requested to seat on the left side as well as the row above the hall. Thank you. Dr. Laiba has gathered some of your memories and we would like you to view them as well.
Please be seated. The chief guest is in the Pro VC office. The procession is entering the hall. Kindly be seated and clear the way. You all are requested to please maintain the discipline of the hall. कुल्ज़-ए हस्ती से तो उभरा है मानिंदे हिजाब, इस ज़िया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी. From the sea of existence you rose like a bubble. In this dwelling of loss, life is your test. खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू. खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार तू. पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेज़िन्हार तू. While you're still immature, you're nothing but a heap of dust. When you ripen, you will become an irresistible sword. We welcome our academic procession and we officially inaugurate the 14th convocation of Rawalpindi Medical University 2023. Now you may all please rise for the national anthem.
invite Professor Dr. Naeem Zia for proceedings of the 14th convocation. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. We start the proceedings of the 14th convocation of Rawalpindi Medical University. I request the Vice Chancellor, Rawalpindi Medical University, Professor Muhammad Umar, to start the proceedings by requesting the Honorable Chief Guest to declare the convocation open. I request our audience to be silent and be seated. माइक उधर नहीं है प्लीज हैंड ओवर द माइक Okay. I invite Mr. Hafiz Haris Mumtaz Malik to recite verses from Holy Quran followed by the translation. Hafiz Haris Mumtaz Malik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير तर्जुमा शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है और वो हर चीज़ पर कादिर है, जिसने मौत और ज़िंदगी इसलिए पैदा किए
कि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अमल में ज़्यादा बेहतर है, और वही है जो मुकम्मल इक़्तिदार का मालिक निहायत बख्शने वाला है, जिसने 7 आसमान ऊपर तले पैदा किए। तुम खुदाए रहमान की तख्लीक में कोई फ़र्क नहीं पाओगे। अब फिर से नज़र दौड़ा कर देखो, क्या तुम्हें कोई रखना नज़र आता है? फिर बार बार नज़र दौड़ाओ, नतीजा यही होगा कि नज़र थक हार कर तुम्हारे पास नामुराद लौट आएगी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। I invite Mr. Muhammad Fizan for Naate Rasool Maqbool. Mr. Muhammad Fizan, please come for the Naat. सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुदूद सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद ताइरे सिदरा हुजूर जानते हैं।
I request Ms. Fazilat Iftikhar, Best Graduate of Session 2018 for her speech. Ms. Fazilat Iftikhar. Dear distinguished faculty, honored guests, proud parents, and my fellow graduates, Assalamu alaikum. Today marks a significant milestone in our lives as we gather to celebrate 14th convocation of RMU. It is with great pride and gratitude that I, Dr. Fazilat Iftikhar, stand before you as a representative of graduating batch 41. In 2018, I had the privilege of graduating as the best graduate of my batch, an achievement made possible by the grace of Almighty Allah, my parents' support, and of course combined study with my friends. As we step into the world beyond these academic walls, we carry with us the knowledge gained during our medical and clinical years. This knowledge has not only prepared us for the challenges ahead, but also had enabled us to secure prestigious positions in both national and international institutions. Today, I find myself honored to be the Chief Resident Medicine in IMC NESCOM Hospital. As we celebrate this convocation, let us reflect on the journey that brought us here, the friendships forged and the lessons learned. RMU has not just been an institution, it has been our home for knowledge and growth. As I stand here after 4 years looking at my parents, my fellow graduates, this auditorium, my faculty, I could not be more proud for all that we have achieved and may we continue to do so. To the faculty, thank you for your guidance and mentorship. To our parents, thank you for your unwavering support. And to my fellow graduates, congratulations on achieving this milestone. Thank you. Ladies and gentlemen, we have 3 best graduates for the year 2018. I request Ms. Zainab Iqbal, Mr. Abdullah Nasir and Tala to come on the stage, and Ms. Zainab Iqbal will give her speech. Assalamu alaikum everyone. This is Dr. Zainab Iqbal. I would like to welcome everyone, esteemed faculty, dear parents and my colleagues, and a very warm Assalamu alaikum. I stand here today in front of you with a mixture of emotions, a sense of gratitude that fills me and a tinge of bittersweet nostalgia. As the valedictorian of class of 2020, along with my esteemed colleague, I would like to congratulate all of you and a huge round of applause for everybody. In this moment, I would like to acknowledge an empty seat that should have been filled. I recently lost my father. If he were here, he would have been my biggest cheerleader. I owe everything to him. His absence has left an indelible mark on my life. But this teaches me the lesson that life is so fragile, and the privilege that we've all had to bear the burden of treating people, this is huge. Regardless, this moment culminates for me long nights of study, friendships that we've fostered, you guys know who you are, and the personal growth that we've all accomplished. That's all I want to say. Dr. Tala, if you would like to say something. Thank you, and thank you. Long live RMC. Thank you, Zainab. Now I request Ms. Arshia Khan, Best Graduate of Session 2020 for her speech.
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Vice Chancellor, worthy Principal, esteemed faculty, proud parents, and my dear fellow graduates. Assalamu alaikum. I am Dr. Arsha Khan, graduate of Batch 43. Standing here today, I am honored not just as an individual achiever, but as a representative of our incredible graduating class. The position I hold is a blessing of Allah Almighty that He has bestowed upon me, and is also a testament to collaborative efforts and shared commitment to learning that defines our time together. I extend my heartfelt gratitude to Rawalpindi Medical University for providing us with an environment conducive to intellectual growth and personal development. The institution has been the bedrock of our aspirations. To my family, who has been my pillars of strength, thank you for your unwavering support and sacrifices. Your love and encouragement have been my driving force, and I share this achievement with you. To my fellow graduates, as we transition from students to practitioners, may we carry with us the humility to learn, the compassion to understand our patients, and the dedication to make a meaningful difference in the lives entrusted to our care. Congratulations to all, and may our journey in medicine be marked by commitment to service, empathy, and a tireless pursuit of improving the well-being of those we serve. May our future be as bright as the memories we have created over here. Allah Almighty bless you all. Thank you. I request the Vice Chancellor, Rawalpindi Medical University, Professor Muhammad Umar for his address. Professor Muhammad Umar. Namdahu Nasalli ala Rasulihil Kareem. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Minister for Primary and Secondary Health Care, Dr. Jamal Nasser, the Chief Guest, Honorable Chairman, Eidi Foundation, Pakistan, Mr. Eidi, President, College of Physician and Surgeon, Pakistan, Professor Khalid Masood Gondal Sahab, members of syndicates, academic faculties, distinguished guests, my dear Rawalians, graduates of Rawalpindi Medical University, and honorable parents. Assalamu alaikum. I cordially invite you and welcome you to the 14th convocation of Rawalpindi Medical University. I formally congratulate all the graduates for the hard work that has led to you to this great day of bearing the fruit of your hard work to get the degree of MBBS. Respected participants, let me get you acquainted with the Rawalpindi Medical University. It was established as a Rawalpindi Medical College in March 1974 at Faisalabad. It shifted to present premises in November same year as Rawalpindi Medical College. The basic science medical teaching was commenced when there was only one lecture theatre and one dissection halls, with one professor of anatomy. The basic sciences at that time includes only 100 medical students. From this humble beginning of 100 medical students, one lecture theatre and one dissection hall, the college nurtured into a reputable and trendsetter medical institution across the world and made its name on the world map as Rawalpindi Medical College.
ladies and gentlemen, and my dear students and teachers, and my professors and teacher of the teachers, ultimately this led to the upgradation of Rawalpindi Medical College to the Rawalpindi Medical University on 5th May 2017 with the efforts of the faculties, ex-teacher and student of Rawalpindi Medical College. What a big day, what a change, historical event in the history of Punjab and whole Pakistan, that we become the 16th medical university added into Academia of Medicine in Pakistan. Ladies and gentlemen, to date, a total of about 11,030 students and graduates from the institution, including foreign national students from various countries. There are 2,100 Dravidians working in UK, USA, Australia, Canada, South Africa, Gulf and Far Eastern countries. Our graduates not only obtained degrees, but did with distinctions. And it will be very heartening for you that a student topped the UHS examination, not RMU at that time, more than 31 times. They scored 1,200 distinctions, which is itself is a history. Let me praise you quickly through the undergraduate medical education system of Rawalpindi Medical University. RMU is committed to provide excellent education in medicine in par with international standards. Ladies and gentlemen, but where is the evidence? I'm not making a simple speech. We have transformed the undergraduate medical education in Pakistan, not only in RMU, from conventional and hybrid system to integrated modular clinical system, the only public sector university in Pakistan which has completed the 5-year of integrated modular system, which is making history. Ladies and gentlemen, not only making history, but reshaping the medical education in Pakistan with the hard effort of our faculty and students indeed, and commitment of the parents to their institutions. Rawalpindi Medical University upgraded from 6 to 7 merit in the Punjab to 2nd to the King Edward Medical University last year. It has happened in 50 years first times. Why it has happened? It is the hard work of the medical student and their faculty members. Ladies and gentlemen, this is a record breaking, moving up from 7 to the 2nd in Punjab. Let me give you another news, that in a short span of 5 years, not in 5 years, rather in 3 years, the Rawalpindi Medical University became the top ranking university in the history of Pakistan and according to the Time Higher Education, which is unprecedented that institution in 3 years become the top ranking university and got the best score in Time Higher Education, which is the international body to accredit the university. Mr. Chief Guest, let's come to the post-graduation systems. We have completely revamped the systems. Being the proud fellow of the College of Physician Surgeons, Mr. President, we introduced a parallel system, which is again a history in the medicine, which is called the University Residency Program. The University Residency Program, my dear parents, is exactly on the model of Accreditation Council for Graduate Medical Education. This is also first precedent in Pakistan that we exactly follow the university residency models. And Alhamdulillah, today is a great day
that the Rawalpindi Medical University become third or fourth degree awarding university out of 7 universities in the Punjab. Today, inshallah, soon the chief guest will be awarding degree up to the MSMD programs, which is happening first times. And this is in the shortest time of 4 years. My dear student, being administration, we have not wasted a single day. 2017 was the landmark Institute of Medicine that became the university, and it was 2018 when we start the first student in MSMD program, which I am calling the University Residency Program, which is a parallel system of postgraduate in Pakistan. It is not the ACG-ME which we are following. Another good news is we become the first medical institutions, not, not only the university, but the medical college. And ladies and gentlemen, remember at this point of time, there are more than 150 medical colleges and institutions in the country, including Aga Khan. Rawalpindi Medical University is the only university, sir, which is doing the 360-degree or multi-source evaluation, which is the American model. The world has become global village. We learned and practiced this in the COVID. Disease and knowledge has no boundaries. We cannot afford and we cannot exemplify that the doctors or healthcare deliverers of Pakistan are second to any care or any standard of World Federation for Medical Education. So that's what the challenge for RMU. So today's doctor is exactly trained on the WFE model and ACG-ME models. And this has already been declared at the best institution for NLE to examine all the graduates of the Pakistan as a Rawalpindi Medical University. This is available on the website of PMDC. Let me come to the third point. Ladies and gentlemen, what is the actual mission of the universities? Universities thrive for 3 things. They create knowledge by research, and they disseminate knowledge by education and training. Rawalpindi Medical University educate people not for degrees only. I'm not demoralizing yet, you are here for the degree, yes, but we train them, we educate them to become wise, to become scholars. So this is how the Rawalpindi Medical University mission is different, that we do not excel only in medical education, but we produce scholars and great human beings with great values, with the mutual respect to the society, a tolerant society, and produce a knowledge-based economy which lead to the prosperity of this nation. So my dear students, today you are not owning only a degree, but you are committing to the vision of RMU that you will be scholar, you will be the healthcare deliverers, and you will be the messiah of this country. The second thing, the university do is the research. What we understand from the research, if I go by the simple definition, you write few papers to get promotions. This is the whole idea of research in the country, but this is not the Rawalpindi Medical University is doing. Research means to find truth, to speak truth, to being professional, honest, have a truthful data. So we teach research that the graduate of Rawalpindi Medical University will be a truthful human being and citizen in this country, who will go for professional integrity and honesty, and not only write paper for promotion,
and contribute in the scientific knowledge which is useful for the humanity. So this is how we trained our undergraduate, and I feel proud that many of the students sitting here, they have been involved in the research, they have been involvement in the publishing paper. And let me quote here that the Rawalpindi Medical University out of 19 universities is the only university which published seven medical journals. We are only university in the country. I am using only 11 times because this is truth. The student published their journal. The resident published their journal. There is a journal on the health and environment. If you do not know how to face the challenges, if you do not know what is happening with the climate, let me witness here the flood of last years, where the university was given first award by the Prime Minister of the country to contribute maximum to do the flood relief activity in the country. I feel proud of you. This is how you are putting the RMU in the world map, not only the world map, but in the level of grading of humanity to serve the destitute and serve the nation which is paid for you. Let me come to the capacity building, sir. Universities do the capacity building for the nations. In spite of COVID and being very naive of 4-year age, we have started 13 diploma courses. We have started 14 certificate courses, which is a record in the history of medicine in 4 years. And up till now, we have done 250 people have done diplomas and 300 people done the certificate course. This include Mr. Chief Guest, the research and healthcare management. This is the role of the university. So do not take this degree lightly. You are doing more than ordinary institutions. My dear students and parents, no institution can progress unless it believes in technology, believe in innovation, and believe in the digitalization. And very proud, again I am, that in Punjab, out of 7 medical universities, we are again only university, this is 12th time, which have digital classroom, not one, but the 2 classroom, which are the digital or electronically based classroom, built by 10 million rupees. We have the very robust campus management system. We have very robust learning management system. I'm sure you may not have experience of that, but you can know from the now student when they do their LMS exams. The LMS exams, sir, first time in the history of Pakistan, they are usually done after 10 p.m., not a.m., which is the modern teaching. This is the utilization, the proper utilization of the time of the people. Lastly, what project we have done? You can always witness the MBN of Rawalpindi Medical University. I'm sure many of you visited this university before 2018 when it was college. You can see the best lawns, best sports grounds, best examination halls, the most modern digital museum and a section hall, and you can witness the fastest connection in whole of the campuses. We have spent 100 million on the hostels. We still need more money. We are building another 30 million rupees hostel for the girls and the student, which is happening after 50 years.
We are developing the most modern research lab. Mr. Chief Guest, we do not have, after 75 years, in whole country, any clinical or basic research lab where the people can do the clinical PhD research. What an unfortunate story. If somebody has to do the research, he has to go to the ordinary institution like Holy Family Lab or FIP, or for that matter, Aga Khan. So let me point it out for the policymakers, for politicians and leadership of this country that India has built more than 100 clinical research labs, and there is no single research lab in the country. We are still stuck with the few orders. Rawalpindi Medical University is building the first clinical and basic research lab, which will be comprised of 11 labs, 1 animal lab, drug testing lab with a money of 1.7 billion rupees, which is funded by the Higher Education Commission. At least I am not aware of any such lab. Let's come to another component of training, simulation lab. I think in Punjab, the Service Institute has a surgical lab, but the Rawalpindi Medical University have the lab for 10 specialties. There will be simulation lab for the gynae, for critical care, for the surgery, for gastroenterology, the morbid anatomy, for physiology, for microbiology. I can go on and on. And inshallah, when you will come next year, this building will be starting, inshallah, 1st January, which is cost 550 million only on simulation lab. That's the reason the Rawalpindi Medical University has been ranked a top ranking university in the country, because we're changing the paradigm of education training from ordinary training to the simulation training, ordinary teaching to the digital teaching, non-evidence based to the evidence-based training, non-evidence to the research-based training, and changing the curriculums from very beginning, not only changing but the implementing research from first year. I can quote Dr. Khawla here, who became the pioneer in whole country to designing the first research curriculum. Mr. Chairman and ladies and gentlemen, Rawalpindi Medical University in the whole country, including Aga Khan, is the only university which has a research curriculum for the 5-year postgraduate training programs. I'm not saying कि और institution क्या कर रहे हैं, but we have a structured program which is well assessed and well monitored. Because unless you don't do this, you cannot compete the world and World Federation Medical Education. I can go on and on, but because of the constraint of times and our worthy 3 chief guests have to leave, so I will just come to another aspect, which is the patient care model. Aaj tak you have listened about the medical college and medical student getting degrees or getting fellowship or university degrees. What is the university is doing for the patient care? Particularly in parents, I educate to my students that you don't have to do the patient care. Remember, you don't treat disease in the patient. You treat a human being who is ill. So ladies and gentlemen, our third mission is not only patient care, but the service. That's the reason I have requested our third chief guest, Mr. Eidi, who itself is a model for service to the ailing humanity, at least at this point of time. I need more applause for Mr. Eidi. My dear student, we have 22 MOUs. We become the first, not I will say only, the first medical university in Pakistan which has started the emergency
medicine foundation programs. 3 of our graduates already this, and now they are joined the Emergency Foundation program with the Royal College of Emergency Medicine UK, given exemption, which is not exampled first. So our training was witnessed by the President of Royal College of Emergency Medicine, and agreed that this university will be given exemptions after verification, and that is done, which is a great achievement. I can give you 4 more examples, but now in the last, in not going into the detail, I will present to you the 3 things. And my key message, what message you take home? Because you are now graduate. You are the most sacred component of this society. You are the blessed component of this society. You are the best human being on the globe. Why? Because you have acquired the knowledge, skill to save human life. Mr. Chief Guest, the Holy Quran says, when I quote Holy Quran, this means Allah subhanahu wa ta'ala says that if you save one life, you save the mankind. Ladies and gentlemen, and my dear student, is the bureaucracy have that skill? The politician have that knowledge? Not at all. It is you and me who have the knowledge and skill being doctor to save the human life. So you are not holding a paper or piece of paper in your hand. God has bestowed upon you its skill and knowledge that you can save the human life. And Almighty says that if you save one life, you save the mankind. Imagine you are going to save thousands of lives, and will be your status in the standards of Almighty Allah. So you are not ordinary creature. You are the best people around. Do not compare with other peoples. I briefly go through the cycle of the history. We all born by the will of God. We born in the shape of human beings. There is other universe. We can be born as in the shape of animals, birds. The blessing of Almighty कि हमें बेहतरीन शक्ल में पैदा किया जो कुरान शरीफ में आता है as a human being. Second, we born as a Muslim. We don't have to do any effort. This is all blessing of Almighty Allah. Third, you bestowed upon throughout your life a skill and knowledge to save human life. So this is the third blessing of Almighty Allah on all of us, me and you, became the doctors. Again stressing, you are not the ordinary creature. You can be human being, you can be Muslim, but you may not be doctors. Let's come to the third phase. And what is the third? I became the doctor in 4,000 rupees in 1981. A real standing story. How many money has been spent by the taxpayers whose children were not doctors? My villagers were not doctors. 1 lakh rupee. And that is paid by the taxpayers. You know what is the fee structure? You all know. 96,000 only. In 2023, sir, you and me have paid for our children only 96,000 rupees. What government compensate for this? 55 lakh. 55 lakh is paid by the taxpayer. And we become the doctors, we become the vice chancellor, we become the richer and richer because of this skill. And we never have a payback. ये पैसा हमने कभी वापस नहीं किया. मैंने भी नहीं किया, आपने भी नहीं किया, because we never thought as a nation.
So, point I am making here, we are indebted to this nation, to taxpayer to pay back that money. American graduate, never sponsored by the government. It is sponsored by the bank. A richest nation pay back the money to the bank. And the poorest nation, they take money, they make money, they become richer and forget about their institutions. So ladies and gentlemen, what model I am proposing? What solution I am proposing? I am just brushing your memory. You or me are indebted to this nation. We have to pay back at least the money we have taken from this nation. Even a simple cleaner has paid for us in the taxpayer form. So what RMU had done, particularly ED Saab, no doubt you are our role model. ED Saab किसी का नाम नहीं है, ये एक मिशन है. जरूर अब्दुल सत्तार ईदी साहब का नाम लिया जाएगा, लेकिन ईदी साहब ने जो किया वो एक मिशन है जो एक वर्ल्ड मैप पे नहीं एग्जिस्ट करता. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, देयर आर 3 थिंग्स RMU graduate I request and advise. There are the 3 phases of life. You learn and getting degrees. This is first phase of your life. You are getting medal today. Then you earn. You have to earn some money in a real terms to educate your children, to take care of your ailing parents, which spent on you. But ladies and gentlemen, the things stop here in this country. We never do the 3rd phase of life, which is the phase to return. So you learn on the expense of this nation. You learn damaging so many patients because you and me learn on the patient, not on simulation labs. They sacrifice their throat and abdomen because of your poorly skilled cut surgery as a learner, because they believe that this suffering will produce the good doctors which save their life. And then you earn because of this degree which is bestowed upon you today, but where you have returned. At least I'm not aware of anybody came to me in last 10 years जिसने कहा कि जी मेरे पास अब पैसे पूरे हो गए, ये जो आपका 1 लाख रुपया या मेरे पे स्पेंड हुआ मैं वापस कर रहा हूँ. We forget those poor people who basically sponsored our fee while we was learning. So let's go for the payback mission, which is called RMU payback mission. Last but not least, what is that model? I can see Dr. Riaz Sheikh sitting here. I can see Professor Rai sitting here. I can quote Professor Bushra here. I can quote Professor Shagufta here, and many here who are working for this university without pay from last 5 years. So sir, the second class after ED Saab is to these guys who are, I'm just firsting the Maraf Saab here, who are putting the first model in this country after 75 years. You work in institution, a public sector hospital as a very qualified professor, without pay, without petrol, without any transport, without any taking advantage. So my message today is, I do not want only these 5 professors from RMU. I want 100 of you to pay back to this nation and institution. This is my message of this 14th convocation in RMU, because we become the role model. I do not, my honorable parents, I do not want to disclose this, but as ED Saab is here and many of this here, I became one of the humble example for not taking millions of rupees of the government as a pay or any privilege from last 10 years. Because you lead by examples. I can go on and on, but my request is that you do not forget this. Last but not least, I'm grateful to all the 3 chief guests. Dr. Jamal Nasser, which is a proud Ravelian. His contributions are enormous. And we proud that RMG is producing such type of
honest, talented politician, which definitely going to change the destiny of their ministries and healthcare providing. I'm also grateful to President CPSP. There is no person highly learned and respected more than the President of CPSP, whoever he is. But we are lucky that Gondal Saab are our President, and I feel proud to be the Fellow of College of Physicians and Surgeons. Last but not least is the ED Saab. ED Saab is not an ordinary person. I present 3 people here in this convocation. I present Principal Saab and faculty members as role model of academia, teacher, caring the ailing humanity, the professional integrity. This is one model. So you must copy the whole of the faculty and your professor which you are doing. Because many have come to me and उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने भी वाइस चांसलर बनना है. But it will take long way. But good thing. Second model I am presenting is the academia of postgraduate, the fellowship. The third model I am presenting is the political and bureaucratic model as Dr. Jamal Nasser is. Ladies and gentlemen, where I should present the bioethical medal, where I should go for the professional integrity, with whom I should present कि मेरा ये मॉडल होगा लाइफ में to treat the ailing humanity, putting the sick population in front of my children and my family and my life. So again, Rawalpindi Medical University, I remember, ladies and gentlemen and my dear student, become the first to present ED Saab as ever moral model of treating humanity, putting the ailing humanity first than our life. Let's clap for him once again. I need a standing applause for ED Saab. Let's stand up and applause for ED Saab. Thank you very much. You are changing the dynamic of humanity. All degrees, all educations, all medal, unless ye translate into the service to the humanity, कांशिप में कहते हैं कि वो इल्म जो इल्म नाफिया नहीं है उसके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. वो रिसर्च जो इंसानियत को फ़ायदा नहीं देती उसको बंद कर देना चाहिए. We need, and me as you should follow the full print of ED Saab. I'm not mentioning any name. ED Saab become in Southeast Asia the model of morality, the model of professionalism, the model of professional integrity, and number 1 on treating the marginalized population, the destitutes, and the ailing humanity. Sir, congratulations and thank you for sparing time for RMU. Once again, I congratulate the proud parents, students, and all the guests for spared time, and particularly my worthy faculty who work day and night to reshape the medical education in Pakistan. Sir, I stop here by saying कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दायर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, because he is capital is our leader. Thank you very much for your kind attention. Thank you. Honorable Minister for Health, Primary and Secondary Health Department, Government of Punjab, Dr. Jamal Nasir, I request you for conferment of degrees. Let the candidate be present.
I present to you, sir, the candidate who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of MBBS, to which degree I request they are admitted. Chief guest, please. Governor of Punjab, I admit you to the degree of MBBS, and in token there I present to you this degree and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. I request Principal Rawalpindi Medical College, Professor Jahangir Sarwar, to take oath from the graduates of year 2018, 2019 and 2020 of Rawalpindi Medical University. All the graduates, please rise up and you have to repeat this oath. In the name of Allah, the most gracious and merciful, I solemnly pledge myself to concentrate my life to the service of humanity. I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due. I will practice my profession with conscience, dignity, and fear of God. The health of any patient will be my first consideration. I will respect the secrets which are confided in me even after the death of the patient. I will maintain by all means in my power the honor and the noble tradition of medical profession. I will pay due respect and honor to my fellow colleagues. I will not permit consideration of age, disease, disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race or social standing, to intervene between my duty and my patient. I will protect human life in all stages and under all circumstances, doing my utmost to rescue it from death, malady, and anxiety, to be all the way an instrument of Allah's mercy, extending medical care to near and far, virtuous and sinner, friend and enemy. I make these promises solemnly, freely, and upon my honor. Ameen. Honorable Minister for Health, I present to you the medal winners and distinction holders of MBBS year 2018
2020 and request you to award these graduates in recognition of their outstanding achievements in the various professional examinations. Medal winners, please queue up. The best graduate for the session 2018, Fazilat Iftikhar. Now I will call upon position holders of session 2018. First Professional MBBS Annual Part 1 2014, Shazia Tahir Virk. First in college, Salman Majid, first amongst boys. First Professional MBBS Annual Part 2 2015, Fatma Rauf. First in college, Salman Majid, first amongst boys. Fazilat Iftikhar for second professional, first position in the college, Fazilat Iftikhar. Third professional, MBBS. Vote. Third professional, MBBS, Amna Javed, first in college. Final professional MBBS Annual 2018, Sana Vikar, first in college. Now the graduates for year 2019. There are 3 position holders, best graduates for the year 2019. Ms. Zainab Iqbal, Tala Iftikhar, Abdullah Nasir. The position holders for year 2019. क्यों आप इनको आगे बुला लो। Hamza Wakar Bhatti, first in college and first professional MBBS Part 1. Miss Hajra Batul, first amongst girls. First professional annual Part 2 2016, Hamza Wakar Bhatti. Miss Amina, first amongst girls. Second professional MBBS Annual 2017, Muhammad Aram, first in the college. Miss Zainab Iqbal, first amongst girls. Third professional MBBS Annual 2018, Miss Mehrosh Shahid, first in college. Miss Zainab Iqbal, first in college. Mr. Ahsan Tamizuddin, first amongst boys. Final professional MBBS Annual 2019, Mr. Muhammad Harun Anwar, first in the college. Miss Zainab Iqbal, first amongst girls.
Ladies and gentlemen, now the best graduate for session 2020, Ms. Arshia Khan. Position holders for the session 2020, Ujala Abdul Rashid, first in college. Muhammad Zubair Satti, first amongst second professional MBBS annual 2013. Muhammad Hamza, first in college. Mother of Dr. Hamza. Father. Miss Arshia Khan, first amongst girls. Third professional MBBS annual 2018. Muhammad Zubair Satti, first in college. Arshia Khan, first amongst girls. Fourth professional MBBS annual 2019. Muhammad Zubair Satti, first in college. Farwa Shabir, first amongst girls. Final professional MBBS annual 2020. Now I request mother of Dr. Muhammad Hassan Masood to come on the stage. Final professional MBBS annual 2020, Muhammad Hassan Masood, first in college. Arshia Khan, first amongst girls. Ladies and gentlemen, now we have medal winners for individual subjects for which medals have been awarded for first position in surgery. The position for holders of surgery and allied final professional MBBS annual 2018, Professor Abdul Rashid Khwaja gold medal goes to Nehan Farooq for securing first position in surgery. Muhammad Haroon Anwar for first position in surgery. Mr. Muhammad Hassan Masood for securing highest marks in surgery in the final professional MBBS annual 2020. The position holders for securing highest marks in medicine and allied, the medal is late Ghulam Rasool medal, father of Professor Muhammad Umar. Final professional MBBS annual 2018, Mahdush Ahmed for securing first highest marks in the medicine. Tala Iftikhar for securing highest marks in medicine for the year 2019.
Mr. Muhammad Hassan Masood for securing highest marks in surgery in the annual law 2020. Position holders for obstetrics and gynecology, they have been offered late Afroz Jahan Medal, mother of Professor Shagufta Syal. Madosh Ahmed, first position in Gynae Ops. Mehak Rukaiya for achieving highest marks in Gynae and Obstetrics, final professional MBBS annual 2019. Salma Batul for securing first position in Gynae Ops. Zaina Sajid for securing first position in Gynae Ops. Ladies and gentlemen, now this is the beginning of new era. As you are aware that Rawalpindi Medical University is awarding Masters of Surgery and... Zainab, please come on the stage to receive your medal. Ladies and gentlemen, Rawalpindi Medical University has awarded MS and MD degrees for the first time in the history. And now I request the candidates to queue up for receiving their degrees, MS and MD candidates. Mr. Muhammad Sarfraz Anwar. Asiya Salim. Nazia Yusuf. Faisal Shiraz, Muhammad Sarfraz, Hassan Ayad Durani, Ali Hassan, Aftab Rahim, Abdul Basit Bukar, Jamal Nasir Malik, Mujahidur Rahman, Muhammad Suleiman Mushtaq, Adil Shafi, Sayyid Hisham Ahmed, Aisha Murid, Sadia Tasneem, Rabia Sarwar, Shoaib Rasool, Fawad Ahmed Khushal, Muhammad Jazib Ijaz, Asiya Salim, Aisha Ishtiaq, Sumaira Mubashir, Ansa Malik, Afreen Asad, Amna Bibi, Hamera Javed. Muhammad Zishan Zafar, Javeria, Dr. Muhammad Haris Rafiq, Dr. Muhammad Samiullah, Dr. Taiba Said, Dr. Khurram Mushtaq Khokhar. वालेकुम सलाम, बहुत मुबारक हो। तालिकुम।
Sir. I request Dr. Ali Murad to come on the stage. And I request mother of Dr. Ali Murad Jamal and sister. No. Now I request Honorable Idi Saab, please come on the dais and share your wisdom. Idi Saab. Welcome. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आज बहुत ही खुशी का दिन है आप सब लोगों के लिए, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ दो बातें करूँगा। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ, इतनी ज़बरदस्त फैकल्टी टीचर्स यहाँ मौजूद हैं और इनके स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं जो कि आज ग्रेजुएट हो रहे हैं और इनकी पिछली क्लासें भी यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपको सबको मुबारक कि आप जो है वो अल्लाह ताला ने आपको इस मकाम पे पहुँचाया और इनकी मेहनत ने आपको इनके इस मकाम पे पहुँचाया, आप लोगों की मेहनत ने भी। तो पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आज भी हम सरकारी आदत व शुमार को छोड़ दें और रियलिस्टिकली देखें तो 70% लोग जो हैं वो आज भी पाकिस्तान में इलिटरेट हैं। उन सब की मेहनत से करोड़ों रुपए की एक सीट पे आप लोगों की खर्च हुआ है और आपको डॉक्टर बनाया उन सब ने मिलके। आप उन सब को नहीं भूलना, उनको उन्हें और उनके बच्चों की जो है वो अच्छे तरीके से किफ़ालत करना ताकि एक सेहतमंद पाकिस्तान जो है वो हम बना सकें। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा, एक दफ़ा मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे एक अननोन फ़ोन आया, मैंने उठाया तो वो बंदा रो रहा था। तो उसने रोते हुए मुझसे माफ़ी मांगी। तो उससे थोड़ी देर पहले ही मुझे एक इत्ला आई थी कि हमारी एक एम्बुलेंस, ईदी की एक एम्बुलेंस जो है वो जो जहाँ पे लड़ाई चलती है, ये डेरा इस्माइल ख़ान और टांक वगैरह की साइड पे, वहाँ पे ज़ख्मियों को शिफ्ट कर रही थी। फोर्सेस और मजहबी इंतहा पसंदों के दरमियान या दहशतगर्दों के दरमियान लड़ाई चल रही है। तो हमारा स्टाफ जो है वो, हमारा जो एम्बुलेंस का स्टाफ है वो ज़ख्मी हो गया है और वहाँ पे फंसा हुआ है और लड़ाई चल रही है दोनों तरफ। वो ज़ख्मियों को शिफ्ट कर रहा था। तो वो जो कॉल थी ना, उसी ज़ख्मी स्टाफ की कॉल थी, उसको 2 गोलियाँ लगी हुई थी। तो वो रो रहा था और उसने मुझसे कहा कि मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने आप लोगों की नाफरमानी की है और कभी कभी मैंने जो है वो छोटी मोटी बेईमानी कर ली है, तो मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं नहीं बचूंगा। लेकिन अल्लाह ने उसको बचाना था, वो बच गया। वो माफ़ी इसलिए मांग रहा था कि उसके जहन में था कि मैंने करप्शन की है, तो मुझे माफ़ कर दें। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, वो सबके लिए है, टीचर्स के लिए भी है। अगर कोई रोटी के लिए चोरी करता है ना, तो उसको मैं तसव्वुर नहीं करता चोरी में, तो मैं हक भी नहीं रखता उसको माफ़ करने का, और वो ऑलरेडी माफ़ है। चोरी होती है लग्जरी कार के लिए, लग्जरी बंगलों के लिए। तो प्लीज़ ये अब थोड़ा सा समझना आप इस मैसेज को। पाकिस्तान की गरीब आवाम ने आपको ये मकाम दिया है, अपने बच्चों को तालीम नहीं दी लेकिन आपको इस मकाम पे पहुंचाया है। तो इसका लिहाज करना और पाकिस्तान, एक पढ़े लिखे पाकिस्तान के लिए भी जद्दोजहद करना। दूसरी बात मैं
यहाँ पे कहूँगा कि मेजॉरिटी यहाँ पे लड़कियाँ हैं। वो हमारे एक चीफ जस्टिस साहब ने मेरिट का एक कानून पास किया था जिसकी बुनियाद पे कि मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट की बुनियाद पे दाखिला दिया जाए, तो 80-90% लड़कियाँ जो हैं वो सीटें ले जाती हैं, क्योंकि वही ज़हीन है पाकिस्तान में। लेकिन ये औरतों का समाज नहीं है, ये मर्दों का समाज है। तो ख़वातीन जो एक गरीब मुल्क और गरीब मुल्क की आवाम इस मकाम तक ख़वातीन को पहुंचाती हैं, हमारा मर्दाना समाज जो है वो इनको किचन तक महदूद कर देता है, जो कि हमारे लिए अफसोसनाक मकाम है। तो इस मर्दाना समाज के लिए भी आप लोगों को जद्दोजहद करना है। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और पाकिस्तान को तरक्की दे। आमीन। I invite President, College of Physicians and Surgeons of Pakistan, respected Professor Khalid Masood Gondal for his words of wisdom. Professor Khalid Masood Gondal. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala Rasulil Kareem. Chief guest of today, डॉक्टर जमाल नासिर साहब, प्रोफेसर उमर साहब और प्रोफेसर उमर साहब ने रावलपिंडी यूनिवर्सिटी के बारे में जो उनकी अनप्रेसिडेंटेड खिदमात हैं और ये इदारा जिस मकाम पे पहुंचा, प्रोफेसर उमर साहब को, इनकी फैकल्टी को और आप सबको बहुत मुबारकबाद हो। फैसल ईदी साहब एक खिदमत की मिसाल हैं। आप वर्ड मेंटर और रोल मॉडल सुनते हैं, ये अमली मिसाल स्टेज पे इस वक्त तशरीफ़ फरमा हैं। और जहांगीर साहब और इनकी फैकल्टी ने एक बहुत खूबसूरत इस कॉन्वोकेशन का इनकाद किया। आप सब मौजूद हैं, आप सबको मुबारकबाद हो। लेकिन मैं बैठे ये सोच रहा था कि मुबारकबाद आपको भी है, लेकिन यहाँ हाल में वो लोग मौजूद हैं जब आप रात को सोते थे वो रात को जागते थे, जब आप इम्तिहान देने जाते थे वो मुसल्ले में बैठ के नफल पढ़ते थे, तस्बीह पढ़ते थे कि मेरे बेटे और मेरी बेटी का आज इम्तिहान है। आज मुबारकबाद उन लोगों को जा रही है आज। और मैं ये चाहूंगा खड़े होकर तालियां बजाएं अपने पेरेंट्स के लिए आज। और पेरेंट्स को देख के मुझे वो जज्बा पेरेंट्स का याद आ रहा है कि दुनिया में एक ज़ात ऐसी है जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे मकाम से आगे जाएं। डॉक्टर जमाल नासिर ये चाहेंगे कि अगर मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर हूं तो अली मुराद फेडरल बन जाए। सिर्फ एक ज़ात ऐसी है जो बेटे और बेटी को अपने से आगे जाने की दुआ करते हैं, और वो ये पेरेंट्स हैं। और इसकी छोटी सी मिसाल कल हमारे घर में जब ये बात हो रही थी, कल सुबह कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का कॉन्वोकेशन है एंड आई हैव टू चेयर दैट कॉन्वोकेशन। 1000 के करीब लोगों को फेलोशिप का डिग्रीज दी जा रही हैं। लेकिन हसन की वालदा ने कहा कॉलेज की कॉन्वोकेशन भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रावलपिंडी में हसन और उनके कोलीग्स को जाके मुबारकबाद देना, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आज हम मौजूद हैं आपको मुबारकबाद देने के लिए। बाकी चलते चलते मुझे आवाज आई कि जोहर की नमाज का वक्त है। मैं मुख्तसर 2-4 बातें करके अपनी बात 2-3 मिनट में ख़त्म करूंगा। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से मेरा अपना ताल्लुक उस वक़्त से है जब ये कॉलेज बना, और मेरे अपने भाई फाउंडर क्लास के स्टूडेंट ने, ही हैज़ बीन रावेलियन। डॉक्टर रियाज गोंदल बहुत कम लोग जानते होंगे, प्रोफेसर उमर, प्रोफेसर बुशरा के वो क्लास फेलो रहे। सो मेरे भाई भी, फिर मेरे बेटे इस वक्त, और मेरी 2 बहुएं तो FJ की हैं, और तीसरी बहू जो है वो रावेलियन है, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट है, आज मौजूद है। और फिर इसके साथ
आपकी फैकल्टी रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में बहुत लेजेंड प्रोड्यूस किए हैं। प्रोफेसर उमर, इनकी वाइफ का तो तस्करा है, अभी प्रोफेसर असलम मुझे नजर आ रहे थे, ईएनटी में बहुत बड़ा नाम है, शायद उठ के चले गए। और फिर इस वक्त जो आपके प्रिंसिपल्स और वाइस चांसलर है प्रोफेसर इकबाल साहब यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़ा सर्जरी में इनका नाम है। तो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज और रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसने बहुत टीचर, बहुत स्टूडेंट्स और बहुत कंट्रीब्यूट किया नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। प्रोफेसर शुएब शफी मेरे दोस्त, कॉलेज के प्रेसिडेंट, यहाँ के उस्ताद रहे हैं। और फिर इसी अंदाज में डॉक्टर जमाल नासिर तो खुद इसी यूनिवर्सिटी के कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। और इसका अगर आप पंजाब कैबिनेट में जाएं तो द मोस्ट एक्टिव एंड डायनामिक मिनिस्टर इज डॉक्टर जमाल नासिर, पिंडी में काम कर रहे हैं। पिंडी के अलावा जहां भी होता है मेडिकल प्रोफेशन की बात करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। हमने इनसे कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ट्रेनिंग प्रोग्राम, क्वालिटी हेल्थ सर्विस नहीं है। इन्होंने कहा यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम हो, कॉलेज का प्रोग्राम हो, डिस्ट्रिक्ट पे मैं लेके जाऊंगा। 5 डिस्ट्रिक्ट जिसमें बखर, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, जंग और अटक, 5 डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब से अप्रूव कराया फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो कि क्वालिटी को मीट करते थे। और यहां मैं एक तस्करा करना चाहूं कि लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम ले जाने का फायदा क्या है। तो जिस तरह ईदी साहब की खिदमत अपने फील्ड में है, तो मैं अगर ये कहूं कि मेडिकल फील्ड के और प्रोफेशन के, और आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर जमाल नासिर भी ईदी साहब भी बन जाएंगे। क्योंकि जमाल साहब इस वक्त जो मेडिकल कॉलेजेस 5 बने हैं, सियालकोट का नाम लें, गुजरांवाला का नाम लें, गुजरात का नाम लें, डीजी खां का नाम लें, साहिवाल का नाम लें, ये वो कॉलेजेस हैं जिनके डिस्ट्रिक्ट्स में जब पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम बना, ये कॉलेजेस बन गए। इन जिनमें आपने ये प्रोग्राम अप्रूव कराए हैं, ये फ्यूचर के कॉलेजेस बन रहे हैं। और अब आखिर में I am Campbellian, and by the grace of Allah Almighty, I have been the regular vice chancellor of 3 different university. King Edward का graduate, King Edward 4 साल vice chancellor रहा। Now I am also sitting vice chancellor of one of the university और college को lead भी कर रहा हूँ। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जब आप फाइनल ईयर में होते हैं, अपने वीसी के पास आते हैं, और ये बहुत बड़ी ऑनर है कि जहाँ के ग्रेजुएट हैं, उमर साहब आज वाइस चांसलर बन के यहाँ बैठे हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछा कि आर यू सेटिस्फाइड, अब डॉक्टर बन गए या मुतमईन है? मैंने कहा हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप दोबारा आपको जिंदगी मिले तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैंने कहा मुझे दोबारा जिंदगी मिले तो मैं डॉक्टर ही बनना चाहूंगा, लेकिन मैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज बनना चाहूंगा। आप डॉक्टर नवाज साहब को जानते हैं? ये बच्चे नहीं जानते होंगे। उनकी जिंदगी पढ़िएगा। वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं उस दौर में, आज से 20 साल पहले। और उस शख्स में इंसानियत की औसाफ हमीदा बदरजाए अतम मौजूद थी। और मैं पूरी कोशिश के बावजूद भी शायद डॉक्टर नवाज साहब को उस अंदाज में फॉलो नहीं कर सका। दुनिया में वो प्रिंसिपल थे इस कॉलेज के, लेकिन पूरी दुनिया के लाखों और करोड़ों लोग अगर पाकिस्तान के किसी एक डॉक्टर को जानते थे, उसका नाम डॉक्टर मोहम्मद नवाज थे, जो इनके फिजियोलॉजी के टीचर और प्रोफेसर थे। अजीम शख्सियत थे, रोल मॉडल थे। उनकी जिंदगी को स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा। अब इसके साथ जो लास्ट 1-2 एडवाइसेस, ज़ाहिर है जो भी आता है वो स्टेज पे आके एडवाइस देता है, और एडवाइस में 2 बातों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा। वो है, एक, माँ बाप की इज्जत कभी ना भूलिएगा। माँ बाप के बारे में शुरू में बात कर चुका हूं। और दूसरी, असातिज़ा की इज्जत। ये माँ बाप आसमान से जमीन पे लाने का जरिया बनते हैं, असातिज़ा आपको दोबारा आसमान पे लेके जाते हैं। बाअदब बानसीब, ये 2 चीजें आपने अपने पल्ले बांध ली, आपको दुनिया भी मिलेगी, आखिरत में मिलेगी। एक एदी साहब मैसेज दे रहे थे, उस मैसेज की कंटिन्यूटी में हमारे साथ 3 भाई हैं। रुपया, पैसा, जिस्म, रूह का ताल्लुक खत्म हो जाता है, किसी का हो जाएगा। अजीजो अकरबा रिश्तेदार चंद साल याद रखेंगे, भूल जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, फलाही काम जाएंगे, खिदमत के काम जाएंगे, मरीजों की दुआएं जाएंगी। आज आपने जो ओथ लिया है, इसको अपनी अमली जिंदगी का हिस्सा बना लीजिएगा, और दुखी इंसान के हाथ उठेंगे, आसमान पे चले गए। आपको, आपकी दुनिया भी बन गई, आपकी आखिरत भी बन गई। मकसद इंसानियत की खिदमत रखिए, दोनों जहान की कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। बहुत मुबारक प्रोफेसर उमर साहब, बहुत मुबारक आप सबको, बहुत मुबारक इन वालिदैन को, और मेरी बहुत दुआएं आपके साथ। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।
Thank you, Professor Khalid Masood Gondal, for your words of kindness. I invite Honorable Minister for Health, Dr. Jamal Nasir, for his kind words. Sir. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर अमरी वहलुल उक़दतिम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हज़रत मूसा की दुआ है, मैं आप पढ़ता हूँ अक्सर के अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा और मुझे इतनी हिम्मत अता फरमा कि मेरी बात लोगों तक पहुँच जाए। क्योंकि हज़रत मूसा को लुकनत थी और वो अपनी बात कर नहीं सकते थे, उसके सदक़े हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फ़ी। और ये मैं इसलिए भी पढ़ता हूँ कि जो डॉक्टरों का काम है वो इल्म को अपने सीने में लेके जाना है और फिर इसको ट्रांसफ़र करना है। तो ये बड़ी इस पे आयत पूरी उतरती है। बहरहाल सबसे पहले तो मैं अपने मोहतरम प्रोफेसर उमर साहब का, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल साहब, प्रोफेसर जहांगीर सरवर साहब और प्रोफेसर नईम साहब, फैसल ईदी साहब, प्रोफेसर इकबाल साहब जो मेरे भी उस्ताद हैं और बल्कि मैं कहता हूँ उस्तादों के उस्ताद हैं, और रंधावा साहब और अभी असलम चौधरी साहब भी बैठे थे, मेरे शागिर्द थे, और जागीर सरवर भी मेरी ऑनर है कि मेरे शागिर्द हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ आज उस कॉलेज के अंदर व तो इज़्ज़ो मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, कि मैं उस कॉलेज के अंदर कॉन्वोकेशन के अंदर चीफ गेस्ट बना हूँ। ये मेरे लिए इतना बड़ा ऑनर है, इतना बड़ा ऑनर है कि जब मैं घर से चला तो 2 नफिल पढ़े कि अल्लाह तू ही है, बाकी सब कुछ नहीं है। तो अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त दे देता है। अल्लाह वैसे किसी को ज़िल्लत नहीं देना चाहता जब तक वो ना चाहे। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि आज मुसीबत यह है कि जो तकरीर मैंने करनी थी ना वो मेरे से पहले गोंदल साहब करके चले गए और मेरे लिए बड़ा मुश्किल कर दिया। आज गोंदल साहब की जो तकरीर थी वो इतनी ज़बरदस्त थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। लेकिन मैं दोबारा वही कहूँगा थोड़ा सा आगे बढ़ा के कि ये जो MBBS MS FCPS का इम्तहान है ये खाली बच्चों और बच्चियों का इम्तहान नहीं, ये पूरे ख़ानदान का इम्तहान है। और MBBS सरकारी मेडिकल कॉलेज से करना दुनिया का मुश्किल प्रमोट ज़रूर कीजिएगा। नहीं, मैं कहता हूं कि मेरा लीडर वो होगा जिसका कोई बच्चा या बच्ची सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करके दिखा दे, जिसका बच्चा या बच्ची किसी सरकारी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियर बन के दिखा दे या किसी यूनिवर्सिटी सरकारी से PhD करके दिखा दे। आपको पाकिस्तान की सियासत में 75 साल में एक भी लीडर ऐसा नहीं मिलेगा जिसका बच्चा आज के दौर में MBBS सरकारी मेडिकल कॉलेज से बन के दिखा दे। ये कोई आसान काम नहीं है। सही कहा था गोंदल साहब ने कि रातों को मुसल्लों पे बैठना पड़ता है। हम बच्चियों को देखते हैं, बच्चे तो चलो खलंडरे होते हैं, फिर फुर के अपना कर लेते हैं मामलात। वो बच्चियाँ जिस तरह पढ़ती हैं, मेरी अपनी 2 बेटियाँ डॉक्टर अली मुराद ने तो बादशाहों के स्टाइल से पढ़ा था, लेकिन जो मेरी बेटियाँ पढ़ा करती थी तो वो बेचारी 24 में से 20 घंटे पढ़ती थी MBBS करना। और आप अभी भी देखें कि जो सरकारी मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट जब निकल के डॉक्टर बनता है उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है, और जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का डॉक्टर बन के निकलता है उसकी पर्सनैलिटी कुछ और होती है। तो इसके लिए मैं आपके वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं उनके मियाँओं को करता हूँ, और जिनकी मियाँओं ने किया होता है उनकी बीवियों को करता हूँ। और सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते हैं ना और मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, सबसे ज़्यादा मियाँ बीवी की लड़ाई जब पोस्ट ग्रेजुएशन होती है ना, वो पोस्ट ग्रेजुएशन के दरमियान में होती है,
क्योंकि बेचारी इतने सारे काम कर रही होती है, हमारी बच्ची, उसने घर के काम भी करने हैं, पढ़ना भी है, सारी चीज़ें देखनी हैं, फिर जाहिर है वो टेंशन में भी होती है। और यहाँ से एक अजीब व गरीब 4 साल का एक बड़ा खौफनाक सिलसिला शुरू होता है जो आखिर में एक अच्छी सक्सेस के साथ ख़त्म हो जाता है। बहरहाल जब मैं आपको आया, इस कॉलेज की तारीख बती, उमर साहब ने बड़ी प्यारे तरीके से बताई कि जब हम आए ना, उमर साहब हमसे सीनियर थे 3 साल या 2 साल, तो इस कॉलेज में कुछ भी नहीं था, ये दीवार भी नहीं थी जो बाहर आप सड़क पे देख रहे हैं, और सिर्फ ये कॉलेज की एक बिल्डिंग थी। और उमर साहब के दौर में तो ये हॉस्टल नहीं था, बल्कि ये लाइब्रेरी के अंदर बिस्तरे लगा के सोया करते थे। लेकिन फिर हमारी यूनियन आई और हमने काम किया, बसें दिलवाई, हॉल बनवाया, ये कॉलेज बनवाया, और जो तरक्की हमारी यूनियन में हुई, मुझे खुशी होती है जब मैं दोबारा कॉलेज में आता हूँ, उसको उमर साहब ने, प्रोफेसर उमर साहब ने इस कॉलेज को बिल्कुल और ज़्यादा तब्दील करके रख दिया। यानी कि जो बुनियाद हमने रखी थी, अब कॉलेज में आते हैं तो पता चलता है कि कॉलेज, जिसके लिए मैं उनका कंट्रीब्यूशन को दाद देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने होली फैमिलीज़ को बदल कर रख दिया। मुझे पता है आपने बहुत सारी तकरीरें भी सुन ली हैं, वक्त भी बहुत हो गया, लेकिन मैं ये कुछ बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी सेहत के हवाले से या रावलपिंडी के हवाले से जो 11 महीने उनमें क्या काम किए। पहला काम तो हमने ये किया कि जो एडहॉक डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट थी ना पंजाब में, वो या तो बिका करती थी सीट, 7-7 लाख में बिकती थी, क्योंकि CPSP की वजह से, CIP इंडक्शन की वजह से 7-7 लाख में बिकती थी। और या जिसकी सिफारिश होती थी, बेचारे जो भी दरमियाने दर्जे के और अच्छे स्टूडेंट होते थे, या तो मुल्क से बाहर चले जाते थे या जलील होते थे इस मुल्क में। हमने पहला काम ये किया है, अब जो एडहॉक अपॉइंटमेंट होगी उसमें इंटरव्यू के नंबर हमने 0 कर दिए हैं, ताकि बच्चा जो भी आएगा वो मेरिट पे आएगा, किसी की सिफारिश नहीं चलेगी। और उसकी अपॉइंटमेंट उसी तरह होगी जैसे मेडिकल कॉलेज का दाखिला होता है या CIP की इंडक्शन होती है, इसमें कोई सिफारिश नहीं चलेगी, कोई पैसा नहीं चलेगा। जब हम पिंडी में आए, आपकी दुआ से इस वक्त होली फैमिली हॉस्पिटल 2.25 अरब, मेरे चीफ मिनिस्टर की मेहरबानी थी कि उसने नजर करम किया पिंडी पर, इस वक्त 2.25 अरब से आपका होली फैमिली पूरा का पूरा रिवैम्प हो रहा है, फरवरी में इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। 26 करोड़ में बेनज़ीर, अभी ताली ना मारे, सुनते जाएं बस, छोड़ें। अच्छा 26 करोड़, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं तो फिर टाइम ज़ाया हो जाएगा आपका भी। 26 करोड़ बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल के लिए लाया, जिससे OPD बन रही है, साइकेट्री वार्ड बन रहा है, इंडोर बन रहा है, और मेडिकल यूनिट और सर्जिकल यूनिट बन रहे हैं। 11 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को दिलवाए, जिससे उनकी इमरजेंसी के हालात बेहतर हुए। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 640 स्लाइसिस की CT स्कैन, जो पूरे पाकिस्तान में शायद कहीं भी नहीं है, वो भी इंस्टॉल कर दी गई है। इस वक्त आपके शहर में 70 अरब से या 60 अरब से रिंग रोड, जो 35 साल से नहीं बना था, वो हमारे दौर में बनना शुरू हो गया है। आपके शहर के अंदर एक धोशा डैम 14 अरब से शुरू हो गया है। और आपको एक हैरत की बात बताऊं, करंट लगेगा इस बात से कि पिंडी डिवीजन में 58 डैम थे, जो या तो बने हुए थे या और तकमील के मराइल में थे, लेकिन क्योंकि कुछ लोगों की, सियासी लोगों की वजह से या कुछ और वजूहात की वजह से, हमने 58 डैमों को ठीक करने का ठेका किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह 40,000 एकड़ वाटर से पानी जो है ना सैराब कर रहा है, और थोड़े दिन के अंदर 80,000 एकड़ जो है, जो रावलपिंडी के इर्द गिर्द तमाम डैम हैं, वो तमाम काम करेंगे तो इतनी ज़्यादा ज़मीन सैराब होना शुरू हो जाएगी, आप सोचेंगे क्या रावलपिंडी में इनकलाब आएगा। एक और काम जो हमने अच्छा किया, वो पंजाब यूनिवर्सिटी का कोसार कैंपस गुजर खान में बनवा दिया है, उसकी ज़मीन अप्रूव कर दी है, काम शुरू हो गया है। अब पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए बच्चों को लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, ज़्यादा हुआ तो गुजर खान चले जाएंगे। इसके अलावा हम इस वक्त मरी में गुजर खान, टैक्सला, वाक, कलर, मतलब कौन सा ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसे हमने अपग्रेड नहीं किया। मरी में 35 बेड से 85 बेड में कन्वर्ट किया, डायलिसिस सेंटर शुरू किया, और अब आपकी दुआ से हम बर्न सेंटर शुरू करने जा रहे हैं। बर्न सेंटर जो है, ये पहला भी उमर साहब और हमारी कोशिशों से, होली फैमिली अस्पताल में जो शुरू हुआ था, उनमें उनकी और हमारी कोशिशें शामिल थी। और ये बर्न सेंटर भी हलाले अहमर में हम बनाने जा रहे हैं, जो 40 बेड का होगा इंशाअल्लाह ताला। वो भी एक आपके लिए एक अच्छा एडिशन होगा, उसको लुक आफ्टर होली फैमिली हॉस्पिटल किया करेगा। ये मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं बताता चला जाऊँ। इसके बाद जो आपका जच्चा बच्चा अस्पताल था असगर माल रोड पे 2002 से बनता,
वो भी हमने पंजाब गवर्नमेंट ने ले लिया, इंशाल्लाह उससे भी आपके लिए मुलाजमतों के रास्ते खुल जाएंगे। जो सबसे बड़ी एक अल्लाह ने काम कराया है, जो अभी गोंदल साहब कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में हमने 5 शहरों के अंदर, इसके लिए मुझे 10 महीने लगे, पूरी मेरी वजारत का टेन्योर लग गया। इतनी मुश्किलात थी क्योंकि इस मुल्क में ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि डॉक्टर जो है पढ़ लिख के आगे आएँ या कुछ और करें। बहरहाल मैंने बड़ी मुश्किल से कहा और आज मैं इस स्टेज से ऐलान करता हूं कि 5 इंशाअल्लाह ताला जुलाई में भी 5 नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है उनमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगी। बहरहाल ये वक्त जो है ना आपका, आप छोड़ दें, ये गुफ्तगू बहुत सारी थी, ख़त्म नहीं होगी, लेकिन इस वक्त हम 100 हॉस्पिटल THQ DHQ और 22 टर्शरी केयर को रिवैम्प कर रहे हैं। डॉक्टरों की पोस्टें क्रिएट की हैं हमने, डॉक्टरों को बगैर सिफारिश के प्रमोशन किया है। बल्कि उमर साहब ने मुझे उस दिन रिक्वेस्ट की कि 22 बच्चियाँ जो थी इनके रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी की 1918 से 90 में गई हैं, ये पहली बारी हुआ है। इन्होंने रिक्वेस्ट की और हमने तकरीबन सबकी अपॉइंटमेंट रावलपिंडी में करा दी। ये कभी नहीं हुआ, ये कभी नहीं हुआ। एक आध में कोई मुश्किलात है वो भी हल हो जाएंगी। बहरहाल काम यह है कि हमने इतने कर दिए हैं हेल्थ में कि इंशाअल्लाह ताला आप सरखरू होंगे। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त को ना भूलना, ये वक्त फिर नहीं आएगा। मुझे कभी कभी जब आप सामने बैठे होते हैं ना और बड़ी खुशी से तालियां मार रहे होते हैं, हाउस जॉब कर रहे होते हैं, यकीन करें मुझे तरस भी आ रहा होता है। वो तरस क्यों आ रहा है? मैं आपका जब मुस्तकबिल ताबनाक देखता हूँ ना, क्योंकि जाहिलों की हुकूमतें आती रहती हैं, उनको पता ही नहीं कि पढ़े लिखे आदमी की इज्जत कैसे करनी होती है। ये वो मुल्क है जहाँ वजीर सेहत में अक्सर कहता हूँ उसको लगाया जाता है जिसकी सेहत खराब होती है, और वजीर तालीम उसको लगाया जाता है जो जाहिल और अनपढ़ होता है। और पाकिस्तान की तारीख में तो एक ऐसा वजीर आला भी रहा जिसको पढ़ना भी नहीं आता था उर्दू, ये भी तारीख का एक हिस्सा है। और वो बुला के पूछा करता था अपने सेक्रेटरी से कि यार ये बताओ लिखा क्या है। जब आपके ऐवानों में ऐसे लोग होंगे तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा, क्योंकि आगे जो हालात मैं देखता हूँ, बेचारे मेरे डॉक्टर जो है वो जब FCPS कर लेते हैं या MS कर लेते हैं, उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही होती, बड़ी मुश्किल से जा रहे होते हैं। ये आप जुल्म देखें ना कि एक पिंडी की बच्ची है, उसका दाखिला रहीम यार खान, वो कैसे जाएगी? मैं इस पे वहाँ बैठ के लड़ रहा हूँ। मैं CIP इंडक्शन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ हूँ। पहले अच्छा होता था कि एक प्रोफेसर रिकमेंड कर देता था, बच्चियाँ अपने घरों में पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेती थी। अब नुकसान क्या हो रहा है इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो अच्छी बच्चियाँ, अच्छे लोग हैं जो रशिया और चाइना से MBBS करके आ रहे हैं, हुकूमत रोती है, YDA तंग कर रही है। मैं उनको कहता हूँ भाई वो इसलिए कर रही है कि आप मेरिट को आपने साइड पे फेंक दिया है। वो लोग आकर चाइना और रशिया से वो फ़ौरन कहीं भी उनको दाखिला मिलता है चले जाते हैं, और हमारे जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो बाहर चले जाते हैं, रह जाते हैं। बहरहाल ये वक्त याद कीजिएगा। और मैं कभी कभी एक शेर पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए कि जब याद का किस्सा छेड़ूँ तो, क्योंकि मैं ख़त्म कर रहा हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मुझे अब याद आ रहा है अपना कॉलेज मैंने कैसे वक्त गुजारा। जब याद का किस्सा छेड़ूँ तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं, जब गुजरे लम्हे सोचूँ तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। ना जाने कौन से आंगन में आबाद हैं जाकर मुद्दत से, अब गुजरे लम्हे सोचूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। वो बातें भी फूलों जैसी, वो लहजे खुशबू जैसे थे। वो बातें भी फूलों जैसी, वो खुशबू, वो लहजे भी, वो बातें भी खुशबू जैसी, वो लहजे फूलों जैसे थे। अब शहर चमन में टहलूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। और एक आखिरी खूबसूरत शेर है, वो पल भर की नाराज़गियाँ और मान भी जाना पल भर में। होता है ना, क्लास में लड़ाई हुई, दोस्तों से हुई, 1 मिनट के बाद फिर सुलह होती है, फिर लड़ाई होती है, फिर सुलह होती है, तो वो पल भर की नाराज़गियाँ और मान भी जाना पल भर में। अब खुद से जब मैं रूठूं तो कुछ लोग बहुत याद आते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, sir. Now I request and invite Vice Chancellor Rawalpindi Medical University to present the University Shield to the chief guests. Sir. I request Honorable Idi Saab to please receive your shield.
I request Honorable Dr. Jamal Nasir to receive his shield from the Vice Chancellor. I request Honorable President, College of Physicians and Surgeons, Professor Khalid Masood Gondar, to receive his shield from Professor Muhammad Umar. Now, I request Dr. Uzma Hayat to present a check on behalf of Vice Chancellor, Rawalpindi Medical University, Principal, Rawalpindi Medical University, and Faculty of Rawalpindi Medical College to Honorable Faisal Eidi Saab. Please sit. Honorable Chief Guest, I present to you the graduates of MBBS year 2018, 2019 and 2020 and request you to award these young graduates their degrees. Graduates, please queue up. बैच 18 के 41 बैच जितना भी है वो सारा सेट पर आ जाए 41 बैच जितना भी है बस ये सारे उठ रहे हैं ना ठीक है लाइन में ऐसे आते हैं नेम तो ना सुनो प्लीज प्रोसीड फर्दर आ जाइए वालेकुम सलाम क्या हाल है बेटा वेल डन बहुत मुबारक है आगे आती जाए आगे इधर खड़ी होती है
Attention please. There will be a photograph of each class at the end of the convocation outside the main lecture halls.
Ladies and gentlemen, now the Vice Chancellor, Rawalpindi Medical University will request Honorable Chief Guest to declare the convocation closed. Declare the conference closed. Declare the convocation closed. Ladies and gentlemen, we come to the end of the convocation. I request you to please rise in your seats and wait till the procession has left the hall. The academic procession will leave the hall, and there will be photographs of the medal winners and graduates with the Honorable Chief Guest, Vice Chancellor, Rawalpindi Medical University and Principal, Rawalpindi Medical University. So please gather outside the hall and in front of the lecture theatre. Thank you very much.